Hello children, welcome back to Extra Class with Aaron Mandal. Children, today we are study your lesson number 11, transitive and intransitive verbs. Okay, and this is the part 2 video of this lesson. Part 1 video was already uploaded. You can check it from the description or check it from your playlist, class 6 playlist, right? B part up to we was discussed. Now this is C part and D part we will discuss. So complete the verbs in the sentences, then pick out the component and complements and identify them as subject complement और ऑब्जेक्ट complement. सब्जेक्ट complement है या ऑब्जेक्ट complement है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया सब्जेक्ट complement क्या है पार्ट नंबर 1 वीडियो में. अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. द क्विज मास्टर वॉज फनी, राइट. सो सर्कल द वर्ब्स क्या है, वॉज है, एंड सब्जेक्ट क्या है, द क्विज मास्टर वॉज फनी. हु वॉज फनी, मास्टर वॉज फनी. एंड आपको सब्जेक्ट को भी बताना है. सब्जेक्ट क्या है, फनी. फनी आपका सब्जेक्ट है, राइट. सब्जेक्ट एंड इट इज सब्जेक्ट complement. Okay, saying something to the subject, that's why. Number second, the farmer looked tired. Looked आपका verb है and tired आपका क्या है, subject complement है. Subject complement. Next, number third, the principal selected Rajनीश to be the school captain. Selected आपका क्या है, verb है and school captain ऑब्जेक्ट complement है, राइट. स्कूल कैप्टन ऑब्जेक्ट complement. नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें, पीपल शुड बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल. लोगों को एनिमल के ऊपर प्रति काइंड होना चाहिए, बहुत दयालु होना चाहिए. तो वर्ब आपका क्या है, शुड बी, एंड काइंड आपका क्या है, सब्जेक्ट complement. ओके, काइंड, ओनली काइंड, सब्जेक्ट complement. नेक्स्ट, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. We should respect our elders. Should respect is your verb, and anything else, is there any complement or like that? No, our elders यहाँ पर आपका कोई complement नहीं है. नंबर 6 की बात करें, the class performed well in their examination. performed आपका verb है and well क्या है, आपका subject complement है. subject complement. नेक्स्ट नंबर 7 की बात करते हैं. नंबर 7, ओके. What is number 7? Number 7 is about what? Number 7, okay. They named their son Steve. Any verb is there? Yes, named. Named आपका verb है, circle it. And Steve Rawson, okay. Steve आपका क्या है, it is your which kind of complement? It is object complement. Object complement उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रही है. नेक्स्ट, they left the parcel untouched. Left verb and untouched, it is your object complement, same like number 7. Number 9, Rakesh's success in the final examination earned him a prize. Earn him a prize. So earn आपका verb है, no complement is there, right. ऑब्जेक्ट complement भी नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में भी कोई complement नहीं है इसमें. Number 10, a long walk up the hill made us tired. Mad is your verb and tired is your object complement. Object complement. Next, number 11, the storybook is interesting. Storybook is interesting, right. Interesting क्या है, is your verb and interesting is your subject complement. Subject complement, okay. Next, number 12, the class considers him intelligent. Considers क्या है, आपका verb है
and intelligent is object complement. Object complement. Okay. नेक्स्ट नंबर 13. विल यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरे लिए फेवर करोगे? विल इज योर वर्व, डू इज योर वर्व, एनीथिंग एल्स? नो. इज देयर एनी ऑब्जेक्ट complement or subject complement? No. John is a good athlete, is your verb, and athlete, right? Good athlete, good athlete is your which kind of subject complement? This is subject complement. Next, number 15. The teacher handed us the answer sheet. Handed is your verb and आंसर सीट नथिंग. यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट नहीं है. टीचर ने हमें आंसर सीट दिया. सो यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट के बारे में कम्प्लीमेंट नहीं है. सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे. ऑब्जेक्ट की भी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है. डी पार्ट देखते हैं क्या है. सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल और अंडरलाइन करनी है. Circle the direct object and underline the indirect object. Circle direct object and underline indirect object. The president awarded Amitabh Bachchan the Padma Vibhushan. Amitabh Bachchan. Okay. Underline indirect object. Amitabh Bachchan indirect object and Amitabh Bachchan को क्या मिला? Padma Vibhushan. Direct object. My sister told me an extremely funny joke. Me, मुझे बताया. Indirect. An extremely funny joke. Direct object. I promised my friends ice cream. My friends is your indirect object and ice cream is your direct object. Jatin distributed sweets to all his classmates. Sweets is your what? Direct object, and to all his classmate. All his classmate is your indirect object. Number 5. The waitress got all of us iced tea. Right. So all of us is your indirect object. Iced tea is your direct object. I don't give my paintings to anybody. My painting is your direct object. To anybody is your indirect object. Number 7. She ordered a dozen books for herself. A dozen books is your direct object. Herself is your indirect object. Number 8. I bought Jonathan a birthday gift. Jonathan is your what? Indirect object. A birthday gift is your direct object. Number 9. Second last, the student sent a teacher an email. The teacher is your indirect object and email is your direct object. Kiran made Susan a paper boat. Susan is your indirect object and the paper boat is a direct object. So this is complete D part. Hope you understood well. And let us write में क्या है. Answer this questions. इस questions का answer बताना है. Right, you can do it by yourself. ट्रांसिटिव यूज़ करते हुए, लाइक हैव यू सीन द फिल्म दंगल, क्या आपने दंगल मूवी देखा है? यस, आई हैव सीन द फिल्म. इस तरह से आपको बताना है. लाइक लास्ट वन, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? राइट, according to Dangal, my favorite actor is Amir Khan. Okay, in this way you have to do. See you again in next class. Thank you.